Good morning, students. How are you? Today we are going to discuss some important question of chapter 12, Heron's formula. Right? Now let's start. Question number first. A rhombus shaped sheet with a perimeter 40 meter. Perimeter यहाँ पे rhombus sheet given है. Rhombus sheet इस टाइप की होती है. ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90. राइट. ऑल साइड्स आर इक्वल. तो हियर गिवन perimeter of rhombus. Perimeter of rhombus. Perimeter of rhombus 40 meter, right? And one diagonal 12 meter. One diagonal means a diagonal is AC. AC is equal to 12 meter. Is painted on both side at the rate of 5 rupees per meter square. Find the cost of painting. इसके both side में, रोम्बस के बोथ साइड में पेंट किया गया है और रेट हमारे पास गिवन. फाइंड द कॉस्ट. राइट. तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस मींस 4 into साइड. पेरीमीटर मींस 4 into साइड. 40 देन साइड इज 10 meter. राइट. Side is 10 meter and OA is 6 meter. 6 meter. Right. OA is equal to half of AC. Half of AC means half into 12 means 6 meter. Right. In triangle AOD, find the OD, perpendicular OD. According to Pythagoras theorem, OD is equal to AD square means 10 square minus OA square then square root means 100 minus 36 then square root is equal to 64 is equal to 8 meter. Right. 8 meter. OD is 8 meter. OD 8 meter means BD twice of OD. Diagonal bisect each other. Bisect each other means BD divide by two parts. OD and OB equal. So BD is equal to twice of OD. So 2 into 8 is equal to 16 meter. Area of rhombus. Area of rhombus half into base in half into D1 into D2. यानी मीन्स AC इंटू BD प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल. here AC is 12 and BD 16 cancel is equal to 96 meter square. Right. Painted on both side and rate is given. Here rate is given. Rate rupees 5 per meter. Rupees 5 per meter square. Okay. Find the cost of painting. Cost of painting 96 into 5. 96 into 5 ये तो वन साइड हो गई, लेकिन यहाँ पे है टू साइड्स, बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो 960 रुपीज. राइट. पहले हमने एरिया फाइंड किया. एरिया ऑफ रोम्बस आ गया. रेट गिवन है, बोथ साइड है, तो रेट से मल्टीप्लाई करके डबल कर दिया, तो ये आ गया 960 रुपीज. क्लियर. ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड देखिए. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर सेकंड. यस. The perimeter of an isosceles triangle
is 32 centimeter. Perimeter of an isosceles triangle. This is a isosceles triangle ABC. Perimeter is 32. If the ratio of its equal side and its base, let equal side 3x and base 2x. Why? Because ratio of equal side and its base is 3:2. 3 equal side 3x and 2 base 2x. Clear? And perimeter is equal to 32 centimeter. So perimeter 33x equal side है, so this is 3x, also 3x and base is 2x. So 3x plus 3x plus 2x is equal to 32. 3 3 6, 6 plus 2 8x is equal to 32. X is equal to 32 upon 8 means 4 centimeter, right? So side 2 into 4 8 centimeter and 3 into 4 12 centimeter, 3 into 4 12 centimeter, right? Draw a perpendicular from vertex, divide by two sides of opposite side, two parts of opposite side, right? So this distance is BD is 4. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल टू मेथड है. एक तो मेथड ये है कि इसका परपेंडिकुलर हम फाइंड करें, देन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से. सेकंड है हीरोन्स फॉर्मूले से, राइट? तो नाउ स्टार्ट. साइड ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 12 centimeter, BC is equal to 8 centimeter. First of all, find the semi perimeter. 12 plus 8 upon 2, right? 32 upon 2 is equal to 16. Okay. Now area of the triangle, S minus A, S minus B, S minus C, then square root 16 into 4 8, right? Factor 4 into 4 into 4, 2 into 2 into 2. First 2 4 का 4, then 4 and 2 root 2. 4 4 16 into 2 32 root 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, बिल्कुल सिंपल इजी सा क्वेश्चन था. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 24. बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, दिस इज ए आइसोसेल्स ट्राइंगल ABC and base is BC is 24 centimeter, right? And area is 192 square centimeter. 192 square centimeter. Draw a perpendicular, right? D, ये D point है, this is a D point. Okay, here given is base of an isosceles triangle is 24 centimeter and area is equal to 192 square centimeter. Clear?
तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. फाइंड द height. Height is equal to 192 divide by 12. 192 divide by 12. 12 से डिवाइड कर दीजिए 16, राइट. 16. एडी आ गया हमारे पास 16 सेंटीमीटर. फाइंड द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC. ABC and AB and AC are same because this is a isosceles triangle. So use Pythagoras theorem in triangle ABD. In triangle ABD, BD is half of BC, means 12 centimeter. This is 12 and this is 16. Find the hypotenuse. AB is equal to 16 square plus 12 square. 16 square 256, 12 square 144 is equal to 400, then 20 centimeter. AB is equal to 20 centimeter. AC is also same. AC is equal to AB, so AB is also 20 centimeter. Find the perimeter. So perimeter of triangle, ट्राइंगल का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है. 20 प्लस 20 प्लस 24. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ all these sides, 64 centimeter. Clear? Now next question number 4. Yes, question number 4. From a point in the interior of an equilateral triangle. This is a equilateral triangle ABC. Equilateral triangle ABC. Side let कर लीजिए. Let side of equilateral triangle. Side of equilateral triangle is equal to A. Equilateral triangle है ABC. हमने side let किया A. Okay. From a point in the interior, यहां पे अंदर कोई पॉइंट है in triangle ABC. Perpendiculars are drawn on the three sides. The length of perpendicular means यहां से perpendicular draw किया गया. Okay. ये perpendicular in this side and O से OF perpendicular on AB. Okay, and length are given 14 centimeter, 10 centimeter and 6 centimeter, right? Join AO, OB and OC. Clear? Find क्या करना है? Find the area of triangle. Let the side of equilateral triangle A. So area of equilateral triangle का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट? एंड अनदर मेथड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle BOC plus area of triangle COA plus area of triangle AOB. Triangle ABC divided in three parts. Triangle BOC, AOC and AOB. Clear? So area of triangle BOC half into base. Here base is A.
half into base into perpendicular, and same COA, half into base into height plus half into base into height. Clear? 2 से कैंसिल, this is 7A, 2 से कैंसिल 5A, 2 से कैंसिल, this is कैंसिल 5, 3 और 3A. Total is equal to 15A. Total 15A. Okay. Area of triangle ABC, area of equilateral triangle, both triangle are same, so area also same. So root 3 upon 4A square is equal to 15A. A से A cancel, so A is equal to 15 4 upon root 3 means 60 upon root 3. Rationalize the denominator. So multiply by root 3 and divide by root 3. Then simplify. Find the A side is equal to 20 root 3 centimeter. Clear? Now find the area of triangle. So area of triangle is equal to root 3 upon 4 into side का square means 20 root 3 का whole square. तो root 3 upon 4 into 20 root 3 into 20 root 3, ये cancel 5 into 200 and 300. After multiply we get 300 root 3 centimeter square. ओके, इजी सा है. बस इसमें ये ध्यान रखना है, ये रिमेंबर रखना है कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया और इस ट्राइंगल को 3 पार्ट्स में ट्राइंगल एओबी, बीओसी और सीओए ने डिवाइड किया है, उसका एरिया इक्वल लेना है. इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है रूट 3 अपॉन 4 साइड का स्क्वायर और यहाँ पे बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट, दोनों को इक्वल पुट करा, साइड फाइंड किया एंड वापस एरिया में पुट कर दी साइड. ओके, राइट स्टूडेंट? यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड हाइट इज गिवन. Find the length of its two parallel side. If one side is 4 greater. ट्रेपेजियम की शेप इस टाइप से होती है. दिस इज ए ट्रेपेजियम, राइट? ट्रेपेजियम. One side is 4 centimeter greater than the other. Let CD is equal to x, then AB is equal to x plus 4. रीजन 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन द अदर. इसका मीनिंग है कि सी डी एक्स है तो दिस इज ए एक्स प्लस 4 एंड हाइट बिटवीन दीज पैरेलल साइड इज गिवन 19 सेंटीमीटर. क्लियर? हाइट इज गिवन, हाइट 19 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम also given. Area of trapezium 475 centimeter square and formula of trapezium half into sum of the parallel side, half into sum of the parallel side. So here sum of the parallel side means AB plus CD into height h is equal to 475. So put the value AB x plus 4, CD x and height 19 is equal to 475. So 1 upon 2 into 2x plus 4 and divide by 19. 475 divide by 19. 19 2 जा 38. 47 minus 38 9. 19 5 जा 95. 2 is common, so x plus 2 is equal to 25 and
x plus 2 is equal to 25 and x is equal to 25 minus 2 23, right? So then CD is equal to 23 centimeter and AB is equal to 23 plus 4 27 centimeter. Okay, so length of two parallel sides, length of two parallel sides are 23 centimeter and 27 centimeter. ओके, इजी सा है, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है लेट कैसे करना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. Yes, perimeter of a triangle is 50 centimeter. One side of triangle is 4 centimeter longer than the smaller side, and the third side is 6 centimeter less than 2 of smaller side. Find the area of triangle. Right? First of all, draw a triangle. This is a triangle ABC. ABC. Let smaller side. Let smallest side AB is equal to x, right? And one side of a triangle is 4 centimeter longer than the smaller side. 4 centimeter longer means BC is equal to x plus 4. And third side is AC. AC is 6 centimeter less than the twice the smaller. स्मॉलेस्ट की ट्वाइस से 6 सेंटीमीटर लेस. इसका मीनिंग हो गया x को डबल करके 2x में से 6 क्या कर दो, माइनस कर दो. क्लियर? पेरीमीटर इज गिवन. सो पेरीमीटर ये लेट किया हमने. लेट करने के बाद पेरीमीटर गिवन है. पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर. तो फाइंड द पेरीमीटर. AB प्लस BC प्लस AC is equal to 50 means x plus 4 2x minus 6 is equal to 50, right? x 2x means 4x. 4 minus 6 minus 2 ट्रांसपोज कीजिए. 50 plus 2 means x is equal to 52 upon 4 means 13 centimeter. x की वैल्यू 13 centimeter, right? So AB is here. AB is equal to 13 centimeter. BC 13 plus 4 17 centimeter. And AC 2 into 13 minus 2 into 13 minus 6 26 minus 6 20, right? Clear? Find the area of triangle. Find the area of triangle. For area of triangle, first of all find the semi perimeter. Semi perimeter means 13 plus 17 plus 20 divided by 2 is equal to 50 divided by 2 means 25. S is 25. So area of triangle 25 minus A 13, 25 minus 17, 25 minus 20, then square root, right? So this is a 25 minus 12 and 8 and 5. 25 means 5 into 5, 12, 4 into 3 and 8, 4 into 2 and 55 as it is.
5 5, 2 का 1 5, 4 4, 1 4 कॉमन and remaining is 30, so root 30. So 5 into 4 20 root 30 centimeter square. क्लियर? ये फाइंड करना था हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, क्लियर? इज इट क्लियर? सो next video some more questions important discuss. Thank you very much. Okay student, bye.